Hi students, today I'm going to teach you on how to write the board paper with regards to maths first, followed by physics, followed by chemistry and so on. Usually physics, chem या जो भी subjects, theoretical subjects हैं, जिसमें there are few keywords or few points which have to be taken care of. मैथ्स में थोड़ा और डेप्थ में है, कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है, कौन सी चीज लिखनी है, क्या करना है चैप्टर वाइज, मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ. डेफिनेटली हर साल थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं विथ रिगार्ड्स टू द पैटर्न, बट यस, जो मेजोरिटी ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो जब भी तुम पेपर्स लिखने वाले हो एज अ स्टूडेंट, व्हेन यू विल बी राइटिंग अ बोर्ड पेपर, आई वांट यू टू पर्सनली फोकस ऑन दीज थिंग्स, और मुझे इसी तरीके से बोर्ड पेपर चाहिए. पहले तो यू ऑल वेरी वेल नो दैट जब भी बोर्ड पेपर हाथ में आएगा तुम लोग के पास, राइट, आई वांट यू टू डू वन थिंग कि पहले तो पेपर के राइट साइड पे एक मार्जिन बना दो. सो यू ड्रॉ अ मार्जिन ऑन द राइट साइड. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. लेफ्ट साइड पे भी मार्जिन के अंदर, से फॉर इंस्टेंस दिस इज द मार्जिन एंड दिस इज द एक्चुअल मेड मार्जिन. लेट्स से दिस एंड दिस इज हाउ द पेपर लुक्स लाइक. चलो ये हमारा पेपर है, फाइन फाइन, ये हमारा पेपर है. तो तुम लोग क्या करो, आइडियली यू यूज अ ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन while writing a paper. Okay, so you first make a center margin out here. This is the first thing which you're going to do. Scale से फटाफट तुम लोग center margin बना दो. Okay, that's it, first thing, ताकि you will be able to easily differentiate. You have to be very precise. And since ये paper का right side पे है, तो with the help of a pencil for the rough column you make a margin out here. सो रेड लाइंस जो है ना, वो पेपर के ही मार्जिन और पेपर का एंड पॉइंट है. विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल जो मैंने ब्लैक से बनाया है, दैट्स व्हाट यू डू इन ईच पेज यू आर गोना डू दिस फॉर द रफ वर्क. फाइन है. ओके, एंड ऑल्सो आइडियली यू शुड मेंशन, नाउ सिंस यू हैव अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, that is what I'm going to use it. So you can just mention that this is going to be a rough work. And if I'm starting with question number 1, you be very precise. You be extremely precise while writing. For example, this is your question number 1, and this is your A of question number 1. So you have to be very precise while writing the question numbers. क्योंकि अगर question numbers नहीं लिखा, तो you get a 0. Game over, finish there and then. So let's take a very simple example. अगर banking का sum है, banking के sum में let's say तुम लोग को principal दिया है. So first you write down that principal bracket में P. Let's say it is given as rupees 1000. Let's say this is given a question, banking के sum का. Right with this? Okay. The number of months, for the first time you have to mention, and then bracket में लिख सकते हो. Let's say they are talking about 2 years. 2 years, that means 24 months. So you wrote that. Okay, and then N है, P है. Let's say the rate of interest is given to you. Rate R is given to you as, let's take example, 10%. You have to find the interest. Find the interest. So interest I is equals to question mark, and even maturity value. Maturity value MV is equals to question mark. So ये हमने डेटा लिखा. जब भी डेटा लिखते हो ना, तो पहली बार पूरा शब्द तुम डायरेक्ट लिखोगे P is equal to 1000. किसको पता है कि P क्या है? P stands for power also. P stands for pressure also. P stands for principle also. So we don't know what is P. So you have to be very precise when you're mentioning what exactly is P. इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना फॉर्मूला. ठीक है ना? So now you can write I. अभी पूरा इंटरेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है. N into N plus 1. Okay, just accept my handwriting here today. Upon 2 into 12 into 100. And I think on solve karne pe, you will just substitute. Each and every step has to be written. So it is going to be 24 into 24 plus 1, 25. Into principal is 1000. And the rate given to me is 10. Upon 2
इंटू 12 इंटू 100, बराबर है। जब भी कैंसिलेशन करोगे ना, वो पेंसिल से बताओ। कैंसिलेशन आई वॉन्ट यू टू शो इट विद अ पेंसिल, दैट विल बी ऑलवेज वाइज। ठीक है, अभी तो मैं क्या कर रहा हूं कि आई एम शोइंग इट टू विद अ ब्लू पेन। 2 12 24 गया, 25 और आई वुड रादर सजेस्ट, क्यों ऐसे काटो ना, तो 25 into 10 into 10, सो योर वापस आई स्विच ओवर टू अ ब्लैक पेन, या cancellation with a pencil, cancellation with a pencil. So I is equals to 25 into 100, that makes it rupees. I want that symbol of rupees, 2500. Fine with this? I want you to, with the help of a pencil, box this answer, and then you can start with maturity value ka formula, that is np plus I, and then you may proceed solving further. Okay, last May, I want you to write down statement also. I want you to write down statement. So statement में क्या लिखोगे तुम लोग? Therefore, the interest is rupees 2500 and the maturity value is rupees जो भी है, ठीक है ना? That is 2400 मिलेगा, 24,000 plus 2,500, whatever the answer is. So at the end, I want you to write down the word format का statement. एक statement form में, word form में लिखना है whenever there is a word problem. So बैंकिंग में क्या मैंने सिखाया कि हर एक चीज बहुत स्पेसिफिकली लिखना है, और जैसे ही सम खत्म हुआ देन यू गो विथ सॉल्विंग बी पार्ट। अगर जगह नहीं है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पेज पे लिखोगे। आई वुड ऑलवेज रेकमेंड दैट यू अगेन राइट क्वेश्चन 1b। लिखो ना, ऐसा जरूरी नहीं है बट लिखो ना यार, बी स्पेसिफिक ना, ठीक है। रफ कॉलम में अगर मुझे इधर एड ऑन करना है कुछ, तो मैं जो भी काम करूंगा आई विल बी डूइंग इट ऑन द रफ कॉलम, ठीक है, नॉट इन द फेयर कॉलम। So for example, I want to calculate 2400 into 5, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो भी पार्ट है मुझे रफ कॉलम में चाहिए, इसके बाहर, रफ कॉलम के बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। सो व्हाट आर द टू रूल्स, व्हाट आर द टू थिंग्स आई स्पोक? स्टेप नंबर 1, राइट डाउन ऑल स्टेटमेंट्स, राइट डाउन एंड डिफाइन कि भाई एन कौन है, पी कौन है, एवरीथिंग, डिफाइन ऑल द डेटा। स्टेप 2, write down the formula. And step 3, finally, in word problem, write down the final statement. And please write down the question numbers very cautiously. Did you get this? So banking के सम में और ये कैसे करने का वो तो मैंने तुम लोग को दिखा दिया है, right? With this, अगर मैं next chapter की बात करूं, yeah, this is the way you have to present it, but obviously you take out better handwriting than what I have done out here. Handwriting should be much more better. All right, next, अगर मैं next पे जाऊं, okay, I'll just, okay, let's say this is the paper. ये पेपर के मार्जिन है, समझते हैं ना, चलो ना। और पेपर इधर खत्म हो रहा है, चलो, दिस इज द एंड ऑफ माय पेपर, सो आई हैव मेड अ शीट। सो पहले तो ऑब्वियसली आई ऑलवेज टोल्ड यू कि पहले तुम लोग क्या करोगे कि इधर रफ कॉलम बनाने वाले हो, प्लीज, विदाउट विदाउट फेल। और इधर मार्जिन में भी आई वांट यू टू बाइफरकेट द मार्जिन फॉर अ क्वेश्चन एंड अ सब क्वेश्चन, या दैट्स व्हाट यू आर गोना डू। So after this, if I'm going chapter wise, okay. First, banking में मैंने बोला कि क्या करना है। जीएसटी में भी तुम लोग जब लिखोगे, it has to be written word format. For example, पहले तो अगर वो क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, चलो ना, जीएसटी का क्वेश्चन पेपर में थर्ड क्वेश्चन पे आता है, ठीक है ना। इट्स रिटन दैट अनुज, नहीं, मैन्युफैक्चरर ने ट्रेडर को दिया और ट्रेडर ने कस्टमर को दिया, समथिंग लाइक दैट, राइट? ओके, सो आई वुड गिव द हेडिंग मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस सीपी इज इक्वल्स टू जो भी है रुपीस, फिर मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस
थोड़ा फास्ट लिखो, क्योंकि स्लो लिखोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। रुपीज, फिर उसका जो भी जीएसटी अगर दिया है तो जीएसटी परसेंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल 12%, एंड देन कम्स द ट्रेडर। ऐसे ही ट्रेडर का लिखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, जीएसटी, एंड लेट्स से ट्रेडर के बाद आता है कस्टमर, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसका जीएसटी, एंड देन यू कैन जस्ट राइट ओके। एक बार ये लिख दिया, फिर जो भी तुम लोग को पूछा है यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो इसके बाद जीएसटी ढूंढो, ट्रेडर का, कस्टमर का, एंड आंसर अकॉर्डिंगली। फाइन, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। एंड लास्ट में प्लीज, सिंस इट्स अ रुपीज वाला सम, इवन बैंकिंग और इसमें जब भी मैं बोलता हूं कि रुपीज वाला सम है, व्हेन इट इज अ रुपीज वाला सम, तो यू हैव टू राइट फॉर एग्जाम्पल रुपीज 710.80। आई वॉन्ट टू डेसिमल्स। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मैं थक गया हूं बोल के, समझते ही नहीं है यार कि जब भी डेसिमल आता है यू कैन नॉट लीव द सम एज 710.8। नो, देयर हैज टू बी टू डेसिमल्स। हाउ मेनी टाइम्स शुड आई से दिस यार, थक गया हूं मैं बोल के मैं। देयर हैज टू बी टू डेसिमल्स, दैट इज अ कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू फॉलो इन द रुपीज वाला सम। ओके, लेट्स गो फर्दर नाउ। अगर मैं थर्ड पॉइंटर, सो बैंकिंग में आई हैव टोल्ड व्हाट नीड्स टू बी डन, जीएसटी में आई हैव टोल्ड, फिर शेयर डिविडेंड्स चैप्टर इजंट देयर फॉर ऑल दिस सिलेबस। देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इट इज प्रीटी सिंपल, सिंपल है यार, राइट डाउन ऑल द स्टेप्स। अगर ऐसा दिया है दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस a इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, so mention, please mention करो, since they have real and equal roots। ओके, पहले क्या करोगे, कंपेयर करूंगा, कंपेयर विथ, एवरी स्टेप हैज टू बी रिटन। तुम बोलोगे सर पेपर कैसे खत्म होगा, वो फास्ट लिखो ना पहले से। कंपेयर विथ द जनरलाइज्ड फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिससे तुम लोग को मिलेगा a का वैल्यू कंपैरिजन पे 1 मिलेगा, b का वैल्यू -5 मिलेगा, and c का वैल्यू is a। We know that delta is equal to 0 for real and equal roots. Therefore, b square minus ac is equals to 0. Substitute minus 5 square minus a, which is 1, and c के जगह पे a is 0. So 25 minus a is equal to 0. You get the value of a as 25. And you box the value. Okay, so that is it. Simple रखना है, but you have to write down each and every step. Compare किया, फिर what are the values of a, b, c, formula, substitution. It has to be in depth, right? Okay. Then if I'm talking about word problems is basic, it's nothing great. जो भी दिया है तुम लोग को खाली स्टेटमेंट फॉर्म और सॉल्व करके लिखना है। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप, देर इज नो शॉर्टकट टू इट, ठीक है ना, देर इज नो शॉर्टकट, जस्ट राइट ईच एंड एवरी स्टेप। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और तो कुछ खास है नहीं, खाली वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। Then if I'm talking about linear inequations, linear inequalities, so if I give you -3 less than x plus 2 less than equal to 5, okay, where x belongs to integers, get the solution set and draw a number line। तो पहले तो -3 is less than x plus 2, x को हमेशा पॉजिटिव साइड पे ही रहने दो, शिफ्ट द टू ऑन द अदर साइड, शो ईच एंड एवरी स्टेप। आई डोंट वांट यू टू कट आउट ऑन एनी स्टेप्स। सो कैन आई से द क्रोकोडाइल माउथ जो सीनियर केजी में पढ़ा है, x इज ग्रेटर देन -5, x -5 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, साइड में लिखोगे तो भी चलेगा बाय मेकिंग अ लाइन, बट आई वुड हैव प्रिफर्ड के भाई उससे अच्छा नीचे लिखो, ओके, टेकिंग द अदर पोर्शन, अदर पार्ट
x plus 2 is less than equal to 5. So x is less than equal to 5 minus 2. Please write down all statements. Less than equal to 3. Now, solution set में भी SS नहीं लिखना है. You have to write down the entire word. Solution set. I do not want you to write SS, and you have to put curly brackets or parentheses. I want this same thing itself. Now, minus 5 से बड़ा है. It's greater than minus 5. So obviously it's going to start from minus 4. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, and 3 also will be included क्योंकि it is equal to 3. अच्छा, जब नंबर लाइन प्लॉट करोगे ना, it's a request that you make one extra on LHS and one extra on RHS. एक extra मेरे को चाहिए. I'm changing the color, but however you can make it with a pen only. No problem. Pen से बनाओगे चलेगा. -5, -4, -3, -2, and so on. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. एक एक्स्ट्रा बनाओ. एंड नंबर लाइन पे मुझे तीनों दिखने चाहिए. पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. आई वांट टू observe all of them. Okay. And since -4 is there, it's integers. Integers में तो खाली dots ही आने वाले हैं. Yeah, so these are the dots. This is the way you do it. I would always go for dots. There is also a concept called candy stick concept, but I will always go for a dot. Yeah, 3 tak hai. That's it. So this is the way you do it. You have to be very cautious and careful. X को वो बाजू पे लेके जाओ जहां वो पॉजिटिव है. ठीक है. सॉल्यूशन सेट पूरा लिखना. नंबर लाइन पे प्लस माइनस एंड 0 सब चाहिए मेरे को. अच्छा, अगर ये मेरा रियल नंबर का सेट होता, अगर यही सम रियल नंबर्स में पूछा गया होता, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन सेट, राइट? रियल नंबर्स में सॉल्यूशन सेट गोज दिस वे. सॉल्यूशन सेट पूरा लिखना प्लीज. x such that ओके, स्टार्ट हो रहा है -5 से, खत्म हो रहा है 3 पे. -5 is less than equal to 3 where x belongs to real numbers. This would have been the solution set for real numbers. और मैं अगर इसी में बनाऊं तो -5 से स्टार्ट होता होलो सर्कल, 3 पे खत्म होता डार्क सर्कल. डार्क सर्कल का मतलब दैट वैल्यू इज इंक्लूडेड. होलो का मतलब that value is excluded. Okay, a straight line and then the shading between -5 and +3. This orange would have been the answer on a number line अगर real numbers का set होता, पर integers में black से मैंने बनाया है. ठीक है. Now if you go on with the next chapter, linear inequations, matrices में कुछ नहीं है खास, खाली हर एक स्टेप लिखना तुम लोग. ओके, मेट्राइसिस में देयर इज नो सच थिंग, बट या डू वन थिंग. मैट्रिक्स में मेरा जो फाइनल आंसर होता है ना, मेरा फाइनल आंसर, फॉर एग्जांपल 4, -3, 2 एंड 0, तो लास्ट आंसर में खाली ऑर्डर लिख लेना. ओके, इन द फाइनल आंसर आई वांट यू टू राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. बाकी हर एक सम में लिखने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन में लिख सकते हो और फाइनल आंसर में लिखो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. बस मेट्राइसिस में इतना ही है, नथिंग ग्रेट. देन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री में एवरीथिंग हैज टू बी रिटन. एंड देखो, अगर टीपीटी है टू प्रूव दैट, अगर ऐसा एक क्वेश्चन आया, प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा is equals to 1 upon sin थीटा cos थीटा, तो यू कैन नॉट पहले से इज इक्वल्स टू ना, तुम लोग को बाइफरकेट करना पड़ेगा. बाइफरकेट मतलब LHS, लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा प्लस cot थीटा. tan थीटा को मैं लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot इज cos थीटा अपॉन sin थीटा. एंड प्लीज मेंशन बाजू में मेंशन करो
tan theta is sin theta upon cos theta. And cot theta is cos theta upon sin theta. You have to mention the formulas which you have used, each and every formula, but there is a problem. Log ye karte hai, but I don't want you to do this. No, check this. I don't want you to write down the answer in terms of theta. Make it x. This is the change which you have to make. मतलब सेम ही लिखना है बट सम अदर अल्फाबेट. अगर क्वेश्चन में थीटा है तो आंसर में थीटा वो बाजू में फॉर्मूला में थीटा नहीं चाहिए, मेरे को कोई अदर अल्फाबेट चाहिए. अगर क्वेश्चन में एक्स है तो फॉर्मूला में थीटा लिख. अगर क्वेश्चन में थीटा है तो फॉर्मूला में एक्स लिख. समझा के नहीं? yes, please, I want you to be cautious about this. And then yeah, I'm going to cross multiply. So it is going to be sine square theta plus cos square theta, the whole upon cos theta sine theta. And we know that sine square theta plus cos square theta is 1, identity, upon sine theta into cos theta. And इधर लिखूंगा डॉट 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 3 dots and the reason. Identity sine square x plus cos square x is equals to 1. And finally we say, yes, I have proved it. So this is equals to RHS, hence proved. This is exactly the way you have to solve a trigonometric sum. LHS left hand side अलग, स्टार्टिंग से LHS RHS नहीं लिखना है. You just start from one side, either LHS or RHS. ठीक है? Each and every step in detail. बाजू में उसके फॉर्मूलास पर, अगर x में क्वेश्चन है तो थीटा में फॉर्मूला लिखना, थीटा में क्वेश्चन है तो x में फॉर्मूला लिखना, और लास्ट में प्लीज मेंशन इट इज इक्वल्स टू RHS, hence you have proved your given TPT. Again, in heights and distances, I want diagrams. For example, a diagram is given. Okay, just a moment. You have to draw a diagram. Don't ask me the question कि sir वो diagram बनाना है कि नहीं. I will just ignore you. I'll ignore you. I'll ignore you. So I can say that, yeah, this is one diagram. And then you make another. Oh, sorry. This is one diagram. And this is another. You have to make it with a pencil. That's what you have to do it. And let's say this is the third diagram. So what you do is exactly what you do is that you make a right angle triangle. So obviously when you make a triangle, obviously you draw it, the triangle, with the help of a scale and everything, and 90 degrees. Okay? Please mention A, B, C. I want you to mention the names. अगर ऐसा कोई triangle है, let's say there is a ladder, ये ladder है, which is resting against a vertical wall, and the length of the ladder, let's say it's 17 meter, and the distance of the foot of the ladder and the ground, this distance is 8 meter. Find the value of AB, something like that. Okay, something like that. Using trigonometry. Okay, so obviously if I have Pythagoras, say I can find out this side. ये side 15 मिलेगा. Or I would rather say that, let's put it this way. The question is, one second, I'll just change the question. This value is not given, this value is not given. Per se, I have been told that the angle between the foot of the ladder and the ground is, let's say, 30 degrees. Find distance AB. So obviously I can start this way, that sine of 30 degrees, sine 30 is opposite upon hypotenuse. So sine 30, which is half, the opposite side is AB, and the hypotenuse is 17. Cross multiply. 17 upon 2 is equals to AB. So therefore, I get the value of AB as 8.5 meters. ठीक है? Also, अगर तुम लोग को foot of the ladder पूछा, foot. So foot में
Obviously, don't do something like this. Do it at the bottom of this. I'm going to use cos 30. Cos 30 का formula is adjacent upon hypotenuse. Cos 30 is root 3 by 2. It's going to be adjacent. Adjacent is the side BC and the hypotenuse is 17. Cross multiply. So 17 into root 3 upon 2 is your side BC. So I can say BC is equals to 17 into 1.732 and the whole upon 2. On cancellation with the help of a pencil though, please if possible, 0.866. So I get the length of BC as 17 into 0.866, whatever the answer is, Right now I'm not into solving that part. Okay, 15 point, whatever the answer is, or 16 point. And finally, you please mention in a word form that the distance from the foot of the ladder and the ground is BC, which is equal to this meters, and the length is equal to this. अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में बोला है गेट द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल्स, तो इधर राउंड ऑफ नहीं करने का है. ओए सुनो, नहीं, डोंट राउंड इट ऑफ आउट हियर. नो, you first calculate the entire final answer, get the exact final answer, usko round off karna hai. So if I say, let's calculate this, just give me a minute guys, just give me a minute. It's 17 into 0.866, 14.772 is the answer. Okay, correct up till 2 decimals agar पूछा है मुझे, तो भाई साहब, I want you to round off this third decimal, which is going to be the same basically. So answer is 14.77 meters. Rounding off should be done on the last answer, not the beach ka answer. Okay, yaad rakhna. Fine. So diagram compulsory. Even if I'm talking about equation of a line or midpoint formula, section midpoint formula, all the formulas have to be written, and diagram also is a must. If this is point A, let's say 3,2, and I would always prefer a diagram. This is 4,6. Find the point P which lies on the x-axis, and also find the ratio m:n. Okay, तो इसमें क्या करने का है, point जो P है ना, P lies on x-axis. So you should mention, therefore point P is a, 0, क्योंकि कोई भी point x axis पे होता है तो उसका y coordinate 0 होगा. Fine with this? And then I should mention that a जो 3,2 है ना, let it be x1, y1, and b जो 4,6 है, let it be x2, y2. And then please mention bisection formula. You please mention bisection formula. We have a formula, right? X P, let P be x, y. So x is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n, and y is equals to my2 plus ny1 upon m plus n. ठीक है, formula लिखने का, and then substitute whatever you have. Instead of x we have a, m ढूंढना है, and x2, ये रहा x2, which is 4, plus n into x1. x1 is 3 upon m plus n. M plus n, let it be m plus n. And even out here y is 0. It is m into y2, m into 6 plus n into y1, which is 2 upon m plus n. Cross multiply. So you get 0 is equals to 6m plus 2n. ठीक है ना, 6m plus 2n. I would rather थोड़ा मेरे को क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा. Let this be -2. Okay, I'm just changing my question, क्योंकि अपने सिलेबस में ऐसा ही है.
So shift it 2n is equal to 6m. So 2 upon 6 is m upon n. So from here I get m upon n is 1 upon 3, or m is to n is 1 is to 3. So I have found out the ratio m is to n. अच्छा, अभी मुझे a का वैल्यू ढूंढना है. I would rather say let the common multiple be k. I don't want you to put m as 1 and n as 3. गलत है. इसके बाद I'll go with let the common multiple be k. So m के बदले 1k and n के बदले 3k. प्लीज याद रखना m is 1k and n is 3k. And then I want you to just substitute. I'm just changing the color for a better understanding though, but it remains the same. तो इसमें just give me a minute. Yeah. In this one, I want you to substitute m as 1k and n as 3k and get the answer. And last में please mention therefore the point P is something a comma 0. A मिलेगा ना? And the ratio in which point P divides is 1 is to 3. So a final word statement is expected. So इसमें I would really appreciate you to draw a diagram by section formula, write down the formula, and then the K method. Okay, if you're talking about the chapter called proportion or equation of line, it goes with the same thing. Slope, तो पहले लिखो डेटा. स्लोप लिखो ऐसा, स्लोप ब्रैकेट में m is equals to, let's say अगर tan theta inclination is given to you. Okay, sorry about this one. That is going to be tan 30. That is going to be 1 by root 3. So you have to mention all the words. Slope is m. The point P, x comma y, through which the line passes. Then if you have to find the equation of the line by slope point form, the slope point form is y minus y1 is equal to m into x minus x1. You write down the formula, write down what is m, write down what is the point P, x1 comma y1. सब डिटेल में लिखना है भाई साहब. Proportion की अगर मैं बात करता हूं, if I'm talking about the chapter proportion, and I give you, let's say x is equals to root of 2x plus 1 plus root 2x minus 1 upon 2x plus 1 minus root 2x minus 1. Not x though, I would say, let's say 3. 3 is equal to this. Find the value of x, solve for x. So first mention 3 upon 1. And then please mention by componendo and dividendo. By componendo and dividendo. Yeah. And then you write down the normal thing. Numerator plus denominator upon numerator minus denominator. Then एक point of time आएगा जहां पे तुम लोग को लिखना पड़ेगा squaring both the sides, क्योंकि square root हटाना है. So mention that you are squaring both the sides. Maths में whatever you're doing, whatever you're performing a step, you have to write. Don't skip out on steps, please. Okay. ग्राफ में तो कुछ खास बताने जैसा नहीं है, but when you're doing a graph, okay, you just draw it with a pencil and a scale. It has to be very proper. And ग्राफ में अगर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ऐसा किंक बनाना है हम लोग को. If the graph is not starting from 0, please write down the scale. It carries marks. X axis पे what is your selection? For example, 2 centimeter is 10 units. Y axis पे what is your selection? For example, 2 centimeter is equal to 4 units.
मेंशन द स्केल, किंक बनाओ अगर ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो। दैट्स इट। बाकी तो नॉर्मल सम्स ही है। सेंटर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस है, मीन मीडियन पे, नथिंग ग्रेट। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। प्रोबेबिलिटी, सर हाउ डू वी राइट अ स्टेटमेंट इन प्रोबेबिलिटी? चेक दिस, यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग, यू हैव टू। अगर एक सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, अ कॉइन इज टॉस्ड, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड गेटिंग अ टेल? दो आंसर्स है, सिंपल। सो पहले तो जब कॉइन को टॉस किया, यू हैव टू राइट डाउन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जिधर पॉसिबल है टू राइट डाउन द आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड्स एंड टेल्स, so can I say total number of outcomes which is also called as n of s 2, because there are two outcomes. Total possible outcomes, please write down s. Next line में number है, number n of s. Let's say e is the event of getting a head. मतलब head चाहिए मेरे को. So possible outcomes, there is only one possible outcome. E, I think it is head. मतलब head चाहिए तो head ही आना चाहिए. Number of outcomes, n of e is equals to 1, and therefore probability of e, it is n of e upon n of s. So the answer is going to be half, and you can box that answer. समझा? और फिर अगर नीचे दूसरा पूछा है मेरे को, ये था एक पार्ट, इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। सेकेंड पार्ट, लेट्स से ई के बदले एफ लो, इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल। So possible outcomes, ब्रैकेट में f is tail, and number of outcomes, n of f is 1. So probability of f is number of elements in f upon total number of elements. Half again is the answer. This is the way you write down. It's boring, but yeah, this has to be done, my friends. Okay. If I'm talking about similarity and if I'm talking about circle tangents, let's see how do we go ahead with it. I'll take a sum to show you how the things flourish. Let's take this is a circle. Taking a simple sum up, please. Okay. This is like a circle. Okay. And O is the center of the circle, which is given out here. Okay, so this is, let's say, O, which is the center of the circle. This is given as 32 degrees. A, just taking a random sum in order to explain you the gravity of the situation and how to write it. ABC. Find angle OBC and BOC and ABO. मतलब सब ढूंढ लो ना, ठीक है? So first what you write down is, you draw a diagram in the board exam. Yes, you have to draw. Sorry, don't give me that excuse के sir दिया है ना क्यों draw करने की. You have to draw. Simple. Don't argue with me. First thing, you write down given angle B, angle BAC is 32 degrees. Now this is given. That's it. To find, first find angle BOC, second angle OBC, and third angle ABO.
These are the three things which I have to find. Okay, I'm just changing the color, but obviously in board exam you have to use a black ballpoint pen only. It's preferred. So we start this way. Can I say angle BOC is double angle BAC because they open in the same arc segment BC? So first statement, angle BOC is twice angle BAC. That is going to be 2 times 32. Write down all statements, please. 64 degrees. And the reason, angle subtended at the center of the circle is double that on the circumference of same circle by the same arc. You have to write down the entire statement. So you got the answer as 64. Second is that this is an isosceles triangle because these are radii of the same circle. So OA is equal to OB. That should be my next statement. Right with this? So let's go ahead. OA is equals to OB, radii of the same circle. And therefore it is an isosceles triangle. So angle OAB is equal to angle OBA, and they both are 32 degrees. Statement number 2, because they are radii of the same circle, and base angles of isosceles triangle are equal. Sure. Sounds good. And last, I have to even construct BC. For the simple reason, I have to find that angle, and this was 64. Again, can I say OB is equal to OC, radii of the same circle? I'm changing the font color for a better understanding. Statement number 4. OB is equals to OC, radii of the same circle. Fifth statement. Therefore, angle OBC is equals to angle OCB, and they both are X. Let me call them as X. Base angles I'm just writing of an isosceles triangle. And last step. Therefore, 64 plus 2x is 180. Don't write angle sum property. Don't write that reason angle sum property. The reason should be sum measures of all angles in a triangle is supplementary. Sum measures of all angles in a triangle is supplementary. And then you show the solving. 2x is equals to 180 minus 64. 2x is equals to 116. X is 116 by 2. 58 degrees. And then you have to mention, therefore, angle OBC is 58 degrees. Right with this? Yeah, you need to mention that. And finally, you please write down the answers. A and S. Angle BOC 64, नीचे, उसके नीचे angle OAB 32 और उसके नीचे angle ABO. Angle ABO is 32 and angle OBC is 58 degrees. Please write down the final statement of answers. This is the way you solve tangent and normal wala sums and these sums with detail. हर एक statement के बाजू में dot 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 करके reason डालना है, बाकी तो normal solve करना है. Okay, and if I go with the last part of similarity. Similarity maybe diagram is a must. Diagram is a must. Okay, you draw the diagram.
and you write down all the statements possible. Let's say this is the diagram, and you have to prove that the triangles, let's say ABC, ABC and APQ are similar. So first you obviously write down, given that PQ is parallel to BC, given TPT, ABC is similar to APQ, and then the proof. Okay, so given TPT, to prove that, proof, statement, reason. In triangle ABC and triangle APQ, first I can straight away say ना guys that ये दो triangles में ये दोनों एंगल सेम है, corresponding angles, and ये दोनों angles भी same है, corresponding angles. So by angle test of similarity, ABC is similar to APQ, and therefore AP upon AB is equal to AQ upon AC. Don't write the shortcut CSST, not allowed. Corresponding sides sorry, of similar triangles are in proportion. Corresponding sides of similar triangles are in proportion. So these are the hints and the highlighters on how we write the paper based on each chapter. Diagram should be on the right side. ऐसा कोई रूल नहीं है, बट आइडियली डायग्राम को राइट साइड ऑफ द पेज, वो जो रफ कॉलम बनाते हैं ना उसके थोड़ा आगे ये साइड बना. कंस्ट्रक्शन में आर्क्स हैव टू बी वेरी मच विजिबल, एंड कंस्ट्रक्शन में आई वांट यू टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम. इट्स अ रूल. कंस्ट्रक्शन में रफ रफ भी फेयर जैसा ही होना चाहिए, बट साइज शुड बी स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ अ सर्कल एंड अ टेंजेंट टू इट. सर्कल है, ठीक है ना, टेंजेंट मतलब ऐसा कुछ, मतलब रफ भी फेयर जैसा ही होना चाहिए, नॉट फ्री हैंड विथ पेंसिल, बट नॉट टू स्केल, नॉट अप टू स्केल. कोई भी डायग्राम, एनी फिगर, बट ड्रॉ विथ अ रूलर एंड अ स्केल एंड अ पेंसिल. सॉरी, मतलब विथ राउंडर एंड ऑल दोस इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच यू हैव. नो फ्री हैंड ड्राइंग, इवन रफ वंस. ओके, सो कंस्ट्रक्शन में मुझे रफ डायग्राम चाहिए चाहिए चाहिए, खत्म. एंड फेयर डायग्राम में आर्क्स करता ही नहीं है कोई. नो वन इज इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दिस थिंग्स. Look, when you draw, you drew this. Come on. Then from an external point, from the center, you drew this. ठीक है, फिर आर्क बनाया तुम लोग ने. समझना, ऐसे मोर देन हाफ ऐसा आर्क बनाया. Okay. And then you join them. Okay, this becomes a perpendicular bisector. Then you draw another circle with that as the center. And where the two arcs meet, where the two circles intersect, yes, you are going to just make tangents. And then it's not over. Diagram rough column draw करके rough में भी properly करना है ये सब, but it's not over. Who is going to mention the names? You have to mention them. Let's say this is O, A, where they meet, P, X. Arcs also have to be given a name, B, Q, and R.
That's how you draw. You have to mention even the names. And agar question mein bola record the length of AP and AQ. So with the help of a scale, measure this and write that down in the exam. Read the question carefully. Right? So with this, we end our maths ka journey on how to write a paper and what are the key points which you have to be careful while writing a paper. It has to be very neat. Question number 1, 2 and 3 ho gaya. Fir draw a line. On a new set of a page, I want you to start with the main question 2. Uska A, B, C hua. Then you start with another line. Now, when you're coming across MCQs, how do we go ahead with MCQs? Check. For example, we have question 1 ka A or Roman number 1. It's an MCQ. First things first, I want you to write down the answer. I am interested in your answer. इसमें मेरे ख्याल से A तो नहीं होगा. Wait, let me call this as sub question 1 in an MCQ. I want you to first write down the answer. अगर आंसर डायरेक्टली मिल गया, you write down. या तो उसका जो वर्किंग है ना शॉर्ट में दिखाओ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग. एज अ मॉडरेटर मैं तुम लोग का वर्किंग चेक भी नहीं करूंगा, बट शॉर्ट में दिखाओ. फॉर एग्जाम्पल tan थीटा है तो पूरा फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो? थीटा 45 है तो tan 45 is 1. And let's say the point is 0,1. Find the equation of line. So y minus point लिख दे 0,0. Y minus y1 is m into x minus x1. So y is equal to x is the equation of the line. मतलब जरूरत नहीं है सॉल्व करने का है, but as a moderator or a paper corrector, I'm not going to even check your answers. It's going to be a waste of time. So जितना जल्दी हो सकता है ना MCQ सॉल्व करो. We are just going to see the answer and give a tick. But we are not going to do the corrections. We are not going to check. So instead of doing it in the rough column and ganda, you do it, might as well do it just below the answer. But please, starting में answer, फिर उसके नीचे उसका working. अरे rough में क्यों कर रहे हो यार? जब करना ही है तो fair में करो ना. But with cut short steps. No need to write everything. That's how I'm going to solve the MCQ. So hope you're going to follow this while writing your board paper of maths. Any new points or any new add-ons, I will share or keep on updating you with my WhatsApp group. But meanwhile, yeah, these are the pointers. ये ही मुझे neatness चाहिए और ये सारे pointers मुझे adopt करने चाहिए in my prelim papers which you are gonna write. So thank you guys. You may watch this in fast forward moment also. Okay, friends. Now, how exactly should we write a physics and a chemistry paper? Now, nothing great, but what are the key factors or the key points which you need to be cautious about, right? That's what I'm going to teach you. So let's get going on this. So first thing, just give me a minute. Yeah. The first factor which I'm going to talk about is the keywords. Yeah, the keywords are very important in physics. Jo obviously through practice and through reading the textbook, you will exactly come to know. Because every answer requires a different keyword. Acha, keywords ko underline karna, it is gonna really help you. But that you have to do it at the end of the paper, not at the start of the paper. Never. Because you don't have time. Second, if you're solving a numerical in physics, the entire data has to be written. For example, heat. So you first write down heat. It's a question on calorimeter. Heat is, let's say, 4,200 joules. Then we have mass. So you first write mass, bracket mein M. 100 kg. Are you understanding what I'm saying? Then specific heat capacity. Which is represented by C. Let's say that is 8,100 joules per kilogram Kelvin. You have to find the change in temperature. Change in temperature, that is going to be delta T is question mark.
and then you write down the formula. Q is equal to MC delta T. So initially you'll have to, just like mathematics, when you're writing a numerical, solving a numerical, you have to write down the entire data followed by the symbol it is represented by. That's the first thing. Okay, keywords are important in answers, and physics is always going to be a very descriptive paper. So physics may I want you to write long answers and point wise. I don't want you to mention paragraph wise. I'm not going to check it also. मैं check भी नहीं करेगा. हाँ, boards वाले check करेंगे, मैं नहीं check करूंगा. If you write me, give me paragraphs and paragraphs like you are writing an essay, I'm not going to accept it. I'm sorry. So point wise चाहिए मुझे. Ideally कैसा रहता है कि 1 mark 1 point. This is the tendency of board exam for ICSE. But I want you to write down at least 2 points for 1 mark. So if there's a 1 mark thing, I want you to write down 2 points if they exist. If they exist. पर अगर है ही नहीं, तो 1 mark 1 point is sufficient, and an example if possible. Physics is a descriptive paper. मुझे लंबे answers चाहिए. Finish. Whenever we have a diagram, please draw a diagram. And diagrams always with pencil. Don't ask me कि sir pen से draw करे कि pencil से. It has to be pencil. Whether it be a ray diagram or a convex concave का diagram or a prism का diagram, pencil से. And ray diagram, please write position of object, position of image, and nature of image. A full form. I want you to write down all of these in ray diagrams. बस फिजिक्स में अगर मैं ऐसे कुछ बात करूं तो दीज आर स्मॉल टाइनी थिंग्स. यू हैव टू राइट द पेपर वेरी फास्ट क्योंकि इट्स अ लेंथी पेपर. यू हैव टू राइट डाउन बिग बिग आंसर्स बट पॉइंट वाइज, क्योंकि मुझे पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए. शॉर्ट में आंसर को खत्म नहीं करना है. नो, न्यूमेरिकल्स का पूरा डेटा फॉर्मूला शुड बी रिटन इन डिटेल्स. फिजिक्स में अपार्ट फ्रॉम दिस, diagrams have to be drawn with pencil. They have to be accurately drawn. Accurately means neat and clean, I would rather say. And ray diagrams में position of object image is all necessary. Write down the question numbers. Maths में तो मैंने बता ही दिया है कि तुम लोग को ऐसे वो margin में you have to make a line in order to differentiate, and write down question numbers clearly. If I'm talking about chemistry, chemistry में reactions are very important. रिएक्शंस हैव टू बी बैलेंस. वो लोग ने बोला कि नहीं बोला, तेरी ड्यूटी है, तेरी जिम्मेदारी है कि रिएक्शंस हैव टू बी बैलेंस्ड. नो वन इज गोना आस्क यू ऑल दोस थिंग्स एंड टेल यू. सो केमिकल रिएक्शंस बैलेंस्ड. मुझे डिटेल में आंसर नहीं चाहिए. देख उल्टा आया. केमिस्ट्री में आई वांट वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, सेगमेंट टू सेगमेंट. एक्स्ट्रा लिखना नहीं है. ऑब्जर्वेशन पूछा, you write down a change in color or gas which is evolved or a precipitate which is formed, right? Observation में क्या बनता है उसमें इंटरेस्ट नहीं है. If I ask you, copper sulfate reacts with sodium hydroxide, it forms copper hydroxide precipitate. So I will say a pale blue color precipitate of copper hydroxide is obtained. क्या बना वो नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, पर मेरे को कलर चेंज चाहिए. सो ऑब्जर्वेशंस आर इंपॉर्टेंट. डिफरेंशिएट पूछा तो केमिकल इक्वेशन भी लिखना. व्हेन यू हैव बीन आस्क्ड differentiate between sulfuric acid and hydrochloric acid, so we can use barium chloride solution. Barium chloride reacts with sulfuric acid to form white precipitate of barium sulfate. Write down the reaction if differentiation is asked. ठीक है ना. केमिस्ट्री में वर्ड टू वर्ड आंसर्स चाहिए, लाइन टू लाइन आंसर्स चाहिए, नो एग्जैजरेटेड आंसर्स, नो ह्यूज आंसर्स, नो पैराग्राफ वाइज आंसर्स. नो. 1 mark 1 point, because they are all going to be more than objective based questions. टेबल दिया है अगर, और अगर लिखा है x एलिमेंट है, there is an element x, okay, जिसका एटॉमिक नंबर है 13 एंड मास नंबर है 27. मुझे पता है कि ये एल्यूमिनियम है, पर तो भी नहीं, आंसर एक्स में ही होना चाहिए.
even if you know that X is aluminium as a metal, क्योंकि aluminium का atomic number 13 है, don't show off unless and until they ask you what is X. You have to write down the answers in terms of X only. That's it. Chemistry mein I cannot think about much. Reactions have to be accurate. Diagrams, I don't think diagrams will come to be made. And reactions have to be accurate. That's it. And write word to word, point to point, answer to answer. Don't unnecessarily elongate the answer in chemistry. Physics में करना है, chemistry में उल्टा नहीं करना है. Okay. So guys, this were few tips and tricks which I have shared with you all with regards to physics, chemistry, and how to write a paper in maths. Follow that during my exam.